Good morning, students. So, in this lecture, we will cover the topic expert system architecture, the knowledge base, the engine used in the expert system shell, and knowledge acquisition. Okay, so coming to what is an expert system. So expert system is one of the application of artificial intelligence, or we can say that an expert system is an interactive computer based decision tool that makes use of the facts and certain rules that are in the knowledge base in order to solve some problems. Okay, and comparing this expert system with a traditional computer, we can see an expert system basically consists of an inference engine and the knowledge base, as compared to a traditional computer in which this inference engine is basically a algorithm, and this knowledge base is a data structure. Okay, so in case of expert system, this inference engine plays a crucial role in solving a problem, and the other component, the knowledge base that contains rules and facts in of a particular domain. Now that knowledge base is again being used for solving the task or problem. So in 1970, the first expert system called as Dendral was developed by some researchers at Stanford University, that was basically used for finding the uh, structure of the chemical compounds. And after that, many other expert systems have also been developed. We will study those expert systems in the later slides. So expert system क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड डिसीजन टूल है जो एक ह्यूमन बीइंग की तरह काम करता है। ओके, जो ह्यूमन बीइंग की तरह कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर और एक्सपर्ट सिस्टम में जो बेसिक डिफरेंस है, दैट इज इन्फ्रेंस इंजन एंड नॉलेज बेस, जो ये एक्सपर्ट सिस्टम यूज करता है। एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर सिस्टम में हम inference engine नहीं यूज करते, we use certain algorithms in order to solve a particular problem. नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन एक्सपर्ट सिस्टम। अब एक्सपर्ट सिस्टम में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज होती हैं। द फर्स्ट वन इज द एक्सपर्ट। सो हु इज एक्सपर्ट? A human being who has developed a high level of proficiency in making judgments in a specific domain. हम एक्सपर्ट किस ह्यूमन बीइंग को बोलेंगे? एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसमें एक हाई लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी होती है जजमेंट्स की, किसी स्पेसिफिक डोमेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। व्हाट इज एक्सपर्टाइज? सो एक्सपर्टाइज इज बेसिकली सम कैपेबिलिटीज that expert has. Okay, so most of the times we said कि उस बंदे की इस पर्टिकुलर डोमेन में बहुत एक्सपर्टाइज है। तो उसका मीनिंग क्या है? दैट पर्सन हैज एक्सटेंसिव डोमेन नॉलेज, that person has some heuristic rules that simplify and improve approaches to problem solving. उसके पास कुछ tacit knowledge है जो वो use करता है in order to solve those problems, and he is very much skilled in order to solve those type of problems. Next component in expert system is inferencing. Now inferencing is just like deriving something from the knowledge. Okay, so inferencing is, if I have one fact, Spot is a dog, and I have another fact, all dogs have tail. Now if I want to infer something from these two facts, the new knowledge that I can derive is Spot has a tail. Okay, so this is basically the inferencing, that is deducing new knowledge from the existing facts. And the another component in expert system is the rules. So rules are always in the form if then. If
this condition will met, then we will do this thing. So if then rules are there in the expert system. And the last important uh, component in expert system is the explanation capability or the reasoning capacity that answers why and how. That is explanation in that this expert system gives us while solving a problem. So these are some of the important components or concepts in the expert system. Now coming to the comparison between conventional systems or traditional systems and expert systems. So this is the comparison between two of these conventional systems and expert systems. The first one is, in case of conventional systems, information and processing is combined in one sequential program. We write one program, each and every step is written in that program, sequential program, then those instructions are executed one by one. So this happens in conventional system, but in case of expert systems, the knowledge is separated from the processing. So all the rules, all the facts that are needed in order to solve a problem, they are in the knowledge base, and we make use of inference engine in order to infer the new knowledge. Next difference is the program does not make mistakes. In case of conventional system, usually whatever the program you have made in order to solve a problem, that does not make mistakes. But in expert systems, the program makes mistakes. In case of conventional systems, they do not explain the why. The reasoning process is not explained. But in case of expert systems, explanation is the part of most of the expert systems. Okay, so these are some of the uh, differences between conventional systems and expert systems. Now coming to the difference between human expert and expert system. Now we have identified, or I have identified, some of the attributes where you can compare a human expert with an expert system. In case of human experts, mortality is there. Human being can die, but an expert system can never die. Okay, that expert system can become outdated, but it never dies. Okay, so in case of uh, human experts, knowledge transfer is very difficult, but in case of expert systems, it is very easy to transfer the new knowledge or to add the new knowledge. Similarly, we can say that decision consistency is very low in case of human experts, and decision consistency in case of expert system is very high. Creativity. Human experts are highly creative, but expert systems are not as much creative than the human experts. The reason being, human experts have created this expert system. So we can say that the creativity in human experts is much more than the experts. So okay, so I think from these slides now we can have an idea what is the difference between human experts and expert systems, or in the previous slide we have done the difference between a conventional system and an expert system. Okay, so coming to some more attributes in case of this human expert, the knowledge scope is very broader scope. Okay, and I have already told you in the first slide that in case of expert system, the knowledge scope is narrow. The reason is, जितने भी expert systems हम बनाते हैं, most of the expert systems we develop for solving a particular type of problem. Like I have developed suppose I have developed one expert system, and the main goal of that expert system is to uh, diagnose a disease, particular type of disease. Like we have one expert system, mycin, and the main function of that particular expert system is to identify infectious blood diseases. नो दैट एक्सपर्ट सिस्टम, वो एक्सपर्ट सिस्टम बस इन्फेक्शियस ब्लड डिजीजेस को ही आइडेंटिफाई करेगा. द डोमेन इज वेरी नैरो. बट जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स हैं,
उनका जो नॉलेज स्कोप है वो बहुत ब्रॉड है, वो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो इन केस ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट्स, basically, human expert makes use of common sense and certain technical knowledge in order to solve a problem. But in case of expert system make use of knowledge base in order to infer or in order to solve a problem. So the knowledge is always technical knowledge. Okay, and about knowledge content feature, so human expert gains new knowledge with experience, and in case of expert system we add rules and some knowledge in the form of symbolic representation in order to enhance the existing knowledge. So this is all about the comparison of human experts and expert systems. Now coming to some characteristics of the expert systems, or we can say that some of the main properties of the expert systems. An expert system operates in an interactive system. जो एक expert system होता है वो हमेशा एक interactive way में काम करता है. That means respond to questions, वो आपके जो भी आप उसको queries डालोगे वो आपको respond करेगा. Then aids the decision making process, वो decision making में helpful होता है आपका expert system. Now suppose you have developed one medical diagnosis expert system. अब वो क्या करेगा, वो आपकी हेल्प करेगा इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. वो डॉक्टर का एज ए सेकंड ओपिनियन हम उसको यूज कर सकते हैं, सो दैट ए डॉक्टर is always 100% sure कि whatever the decision he has taken, he is taken right decision. The reason being the expert system भी वही decision निकाल रहा है. Okay, then we have another characteristic as tools have ability to filter knowledge. Okay, there are certain mechanisms where you can filter a particular type of knowledge in order to solve a problem. Then make logical inferences based on knowledge stored. So an expert system, I have already told you, expert system जो होता है वो knowledge base को use करता है जिसमें कुछ rules और facts होते हैं. अब एक्सपर्ट सिस्टम उन रूल्स और फैक्ट्स को यूज करके ही कोई न्यू नॉलेज को इन्फर करेगा या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. और अब इसमें वो कुछ रीजनिंग मैकेनिज्म भी आपको देगा. तो इसमें क्या है कि जो भी उसने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जहाँ जो भी उसको किसी इन्फर करनी है न्यू नॉलेज, वो लॉजिकल इन्फ्रेंसेस के ऊपर ही बेस्ड हो गई. वो टेस्टेड नॉलेज के ऊपर बेस्ड नहीं होगी. वो बेसिकली व्हाट आर द एक्सप्लिसिट नॉलेज यू हैव मेटेड इनटू द एक्सपर्ट सिस्टम और नॉलेज बेस ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम, वो उसी के बेसिस के ऊपर होगी. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एबिलिटी टू एक्सप्लेन रीजनिंग. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन केस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम. जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है वो आपको व्हाई एंड हाउ का आंसर देता है. Then is an expert system works in a domain specific problem. Okay, already we have discussed this particular characteristic. And next is the structure of expert systems. अब expert system जो है उसका आर्किटेक्चर क्या है या उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से उसमें पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं. सो दिस टॉपिक इज दिस. अब इसमें क्या है कि वी हैव वन कंसल्टेशन एनवायरनमेंट एंड वी हैव वन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. यू कैन सी here from this particular slide, that is we have one consultation environment, on another side we have the development environment. Now in case of consultation environment, a user is there. Now user is using this user interface in order to put his queries, and definitely after inferencing the user will get his answers on this computer. So this is the consultation environment. On the other side we have the development environment, where we have the inference engine, and inference engine consists of explanation facility, knowledge refinement, blackboard. Okay, that is also called as working memory. And then these are connected to the
knowledge engineer. So knowledge engineer is there that adds certain rules and facts into the knowledge base, and how this knowledge engineer is gathering the knowledge in order to add that rules and facts into the knowledge base. What this knowledge engineer is doing is he is gathering the knowledge from human experts as well as from other knowledge resources. So this knowledge, the work of this knowledge engineer is to gather knowledge, और वो नॉलेज कहाँ से लेके आ रहा है, कुछ ह्यूमन एक्सपर्ट्स से जो उस फील्ड में काम करते हैं, एंड सम अदर नॉलेज सोर्सेज। वो कुछ बुक्स भी हो सकती हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, कुछ टेक्निकल पेपर्स भी हो सकती हैं, एंड इंटरनेट सोर्सेज भी हो सकते हैं। एंड आफ्टर गेटिंग दैट knowledge from experts and from books, what this knowledge engineer is doing is he is representing, or he is adding these facts and rules into the knowledge base, and this knowledge base act as a long term memory. Okay, now this what inference engine is doing, whenever a user is putting his question, now this goes to the inference engine, and inference engine makes use of this knowledge base, and by making use of this knowledge base in which certain rules and facts are there, and ultimately it gives answers back to the user. So these are the four main, we can say that main components of the expert system. One is the knowledge acquisition, where a knowledge engineer acquire different type of knowledge from the experts and other knowledge resources. So next is the knowledge base, that is basically a collection of facts, rules and procedures that are organized into schemas, and this knowledge base is being used by the inference engine in order to solve a problem. Now this inference engine is also composed of this blackboard, explanation facility and knowledge refinement. Now what is knowledge refinement? That is uh, knowledge refinement is basically कि हम जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको साथ साथ में रिफाइन भी करते जा रहे हैं। ओके, एंड दिस ब्लैक बोर्ड इज बेसिकली वर्किंग एरिया जिसमें हम करंट प्रॉब्लम और कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करते जा रहे हैं while solving the problem, and this explanation facility very important module of this inference engine। अब ये क्या करता है, ये आपको जो मैंने पहले बताया, ये जो रीजनिंग प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करता है। सो दिस is very important part of the inference engine, that is explanation facility। Okay, so these are some of the parts of the expert system, or we can say that this is the generic architecture of the expert system that we basically use in order to solve a problem। The next is the human elements in expert system। इस particular expert system में क्या क्या human elements है? वन इज द एक्सपर्ट। अब वो एक्सपर्ट कौन होगा? जिसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, कुछ जजमेंट्स होंगी, कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, उसके पास कुछ मेथड्स होंगे, कुछ एडवाइसेस होंगी, और ये सारी चीजें किसके लिए होंगी? कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो दैट इज द एक्सपर्ट। अब एक नॉलेज इंजीनियर भी हमने इसे आर्किटेक्चर में देखा। सो नॉलेज इंजीनियर का क्या क्या काम है? इट हेल्प्स द एक्सपर्ट जो भी है उनसे कुछ नॉलेज को एक्वायर करेगा। नॉलेज इंजीनियर क्या करेगा? जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे वो नॉलेज को गैदर करेगा बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस, बाय गिविंग सम सर्विस, एंड उस नॉलेज को वो इम्बेड करेगा इनटू द नॉलेज बेस, ताकि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इसके अलावा हमारे पास एक यूजर होता है एक्सपर्ट सिस्टम के आर्किटेक्चर में। अब यूजर कौन है? यूजर इज एनी पर्सन हु इज इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम, एंड इसके अलावा वी हैव सिस्टम एनालिसिस्ट, बिल्डर and supporting staff। So these are the human elements that are involved in the expert system। Now coming to some of the examples of expert system, ये कुछ examples हैं जो already developed systems हैं। Like we have one of the earliest expert system that was based on backward chaining। We will see this what is backward chaining in the later slides। So Mycin is basically an expert system जो क्या करता था कि कुछ infectious
ब्लड डिजीजेस को आइडेंटिफाई करता था, and it also recommends certain drugs based on the weight of the person. So this is one of the earliest expert system जो एक नैरो डोमेन में काम करता था, जो कुछ इन्फेक्शियस ब्लड डिजीजेस को आइडेंटिफाई करता था और रिकमेंड करता था कुछ ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिसिन ऑन द बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द पर्सन। फिर एक और एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप हुआ, द नेम वाज डेंड्रल। दिस इज अगेन एन एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली यूज्ड फॉर केमिकल एनालिसिस। अब इसमें क्या है कि ये हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताता था किसी भी केमिकल कंपाउंड की। This is another expert system that was developed, and we have this R1/XCON. Now it could select specific software to generate a computer system wished by the user. Cadet is another system that is basically used to identify the cancer in its early stages. Now, the basic building block of all these expert system is the knowledge base and the inference engine. सारे के सारे एक्सपर्ट सिस्टम जितने भी ये हैं, ये एक तो डोमेन स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड इज we have the knowledge base related to that particular domain. अब जैसे ये माइसिन है, माइसिन क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, ये कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस को सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को, तो उस केस में जो नॉलेज हमने नॉलेज बेस में डाली है वो उसी डोमेन के रिलेटेड होगी। Now next is we have already done this architecture in the previous slide. This is just the block diagram of this expert system. I think we have already discussed in the previous slide. So you just read out this architecture. If any problem is there, then you can consult me. Okay. So next is the components of the expert system. अब एक एक्सपर्ट सिस्टम में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि नॉलेज बेस, ये बार बार आएगा, नॉलेज बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज बेस में क्या होगा कि हमारे पास एक तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के डोमेन की नॉलेज होगी, एंड सेकंड इज हमारे पास जो कुछ ह्यूरिस्टिक नॉलेज भी इसमें हो सकती है। We have factual knowledge and heuristic knowledge, and we already know what is heuristic knowledge. That is based on the that gives us an idea how far we are from the goal state. Okay, so knowledge base contains some factual knowledge and heuristic knowledge. And in case of inference engine, now inference engine is what is inference engine doing? Inference engine is drawing some inferences based on the data. Now data is facts and rules. Now two type of inference strategies are there. One is this forward chaining and second is the backward chaining. In case of forward chaining, what we have is there are certain facts. This is fact 1, this is fact 2, fact 3, fact 4. Okay, and based on these two facts we have taken this decision 1, and based on these facts third and fourth we have taken decision 2, and on the basis of these two decisions we have taken decision 4. Now what we are doing is we are moving from facts to the decision. So what is this? This is forward chaining. When we move from facts and rules and we conclude something, or we take some decision, then that is basically a forward chaining strategy. Like prediction of share market status as an effect of changes in interest rates. जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स चेंज होंगे तो हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं शेयर मार्केट की स्टेटस का। ओके, सो दिस इज बेसिकली फॉरवर्ड चेनिंग। नेक्स्ट इज द बैकवर्ड चेनिंग। अब बैकवर्ड चेनिंग में क्या होगा, व्हाट वी आर डूइंग इज वी हैव डिसीजन ऑलरेडी, एक डिसीजन पे हम पहुंच चुके हैं, एंड वी बैक ट्रैक कि how we have reached at that decision. I'm giving you one example, like in case of medical field, एक किसी ह्यूमन बीइंग को सपोज कैंसर हो गया। नो कैंसर हो गया, दिस इज यू कैन से दैट ए डिसीजन और डायग्नोसिस हो गया, कैंसर हो गया।
बट वो अब डॉक्टर क्या करता है, वो बैक ट्रैक करता है कि कैंसर हुआ कैसे, तो वो फैक्ट्स के ऊपर जा रहा है। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम डिसीजन टू facts, that is basically a backward chaining strategy. Okay, so on the basis of what has already happened, the inference engine tries to find which conditions could have happened in the past for this result, कि कौन सी कंडीशंस की वजह से ये चीज हुई है। जब हम ये चीज करते हैं तो उस स्ट्रेटजी को हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड चेनिंग। सो फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग, these are the two important strategies that are being used by the inference engines in order to reach at conclusion. Okay, so in the next slide, now the next component is the user interface. The user interface, basically it provides the interaction between the user and the expert system. यूजर इंटरफेस जो है वो एक एज ए मीडिएटर का काम करती है बिटवीन यूजर एंड द एक्सपर्ट सिस्टम। अब यूजर इंटरफेस की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छी यूजर इंटरफेस होनी चाहिए ताकि जो एक यूजर है जो उस एक्सपर्ट सिस्टम को यूज कर रहा है, जो भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, वो एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में प्रॉब्लम के गोल तक पहुंच जाए। ओके, एंड जो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जो उसका रीजनिंग प्रोसेस है, वो भी उसको एक अच्छी तरह से उस यूजर इंटरफेस पे दिखाई दे, ताकि उसको ये पता चल सके कि मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई है। बिकॉज इन्फ्रेंस इंजन गिव्स दैट एक्सप्लेनेशन व्हाई एंड हाउ, तो वो भी सारा कुछ आपकी यूजर इंटरफेस पे ही आएगा। तो आपकी यूजर इंटरफेस ऐसी होनी चाहिए कि एक यूजर जो है वो उसका एफिशिएंट यूज कर पा रहा है। Now the next topic is need and justification of expert system. Why we need expert system? The first reason is the availability. They are easily available. जितने भी expert systems हैं वो easily available हैं क्योंकि इनकी mass production होती है हमेशा में। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है, कोई भी आपके पास कोई एक्सपर्ट सिस्टम बनता है, उसकी मास प्रोडक्शन होती है, तो यू कैन अवेल दैट फैसिलिटी। नेक्स्ट इज द लेस प्रोडक्शन कॉस्ट दैट मेक्स देम अफोर्डेबल। स्पीड, दे ऑफर ए ग्रेट स्पीड। अमाउंट ऑफ वर्क जो है एक इंडिविजुअल के ऊपर काम करने का जो लोड होता है वो कम हो सकता है अगर हम एक्सपर्ट सिस्टम यूज करें। लेस एरर रेट एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, एक एक्सपर्ट सिस्टम का जो एरर रेट है वेरी लेस होगा और ना के बराबर होगा। रिड्यूसिंग रिस्क, इवन if the environment is very dangerous, these expert systems work steady response. They work steadily without getting emotional, tensed or fatigued. Okay, so these are certain reasons that tends us to make use of these technologies. Okay. So the next slide is applications of ES और expert system. कहाँ पे ये use होता है expert system? So already in the previous slides we have seen the expert system diagnosis के लिए use हो रहा है, for chemical जो compound है उनकी structures find करने के लिए use होता है, डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस मीटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ का कंट्रोल करना है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर certain applications where we can make use of these expert systems. Now coming to the last topic, that is the expert system shell. Now expert system shell is basically a software development environment. Okay, अब कोई भी expert system बनाने के लिए we need the basic components. अब
जो शेल है that is associated with the prescribed method for building applications by configuring and initiating these components. जो एक्सपर्ट सिस्टम शेल है वो आपको एक जो बेसिक कंपोनेंट्स चाहिए एक्सपर्ट सिस्टम में वो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि आप एक एक्सपर्ट सिस्टम को बना सको। अब जो जेनरिक कंपोनेंट्स होंगे एक शेल के अंदर, एक्सपर्ट सिस्टम शेल के अंदर, वो कौन कौन से हैं? द नॉलेज एक्विजिशन सिस्टम, देन वी हैव द नॉलेज बेस जिसमें कुछ फैक्ट्स एंड ह्यूरिस्टिक्स होते हैं, then we have some inference mechanisms, we have the explanation system, we have the user interface. Now user is interacting with this user interface, and knowledge acquisition system, that is to acquire new knowledge, this system is interacting with the experts. Okay, so these are certain components of the expert system shell that we can use in order to build an expert सिस्टम। हम ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज कर सकते हैं एक एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने के लिए। सो इसमें ऑलरेडी आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड कि नॉलेज बेस क्या होता है, उसमें कुछ इफ देन की फॉर्म में रूल्स होते हैं, वी यूज सर्टेन लैंग्वेजेस इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स इनटू सम लॉजिकल स्टेटमेंट्स, देन वी हैव रीजनिंग इंजन engine that we already discussed ki that reasoning engine makes use of inference mechanisms, okay, reasoning capabilities to draw new conclusions, okay, and we have seen this knowledge acquisition system जो एक सब सिस्टम है और टू हेल्प एक्सपर्ट्स इन बिल्ड नॉलेज बेसिस। जो भी एक एक्सपर्ट सिस्टम का नॉलेज बेस है उसको बनाने के लिए जो हम एक सब सिस्टम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज नॉलेज एक्विजिशन सिस्टम। ओके, एंड नॉलेज बेस इज द बिगेस्ट बॉटलनेक इन बिल्डिंग एक्सपर्ट सिस्टम्स। एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाने के टाइम पे ये एक बॉटलनेक होती है क्योंकि जब तक हमारे पास अच्छी नॉलेज नहीं होगी, अच्छे रूल्स नहीं होंगे, अच्छे फैक्ट्स नहीं होंगे, देन हमारा सिस्टम जो है वो एक्यूरेटली काम नहीं करेगा। एंड देन वी हैव अनदर कंपोनेंट इन expert system cell, that is explanation subsystem. So a subsystem that explain the system's action, so whatever the action your expert system has taken in order to solve a problem, तो वो सारे रीजनिंग प्रोसेस उसका जो बताना होता है वो किसका काम होता है? एक्सप्लेनेशन सब सिस्टम का। ओके, यू रीच एट सर्टेन सॉल्यूशन और जो आप गोल दे रहे हो कि यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, उस सारी चीज का जो आंसर देना है वो किसने देना है? एक्सप्लेनेशन सिस्टम में। एंड द यूजर्स इंटरफेस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द आर्किटेक्चर, a means of communication with the user, and the user interface is generally not a part of the expert system technology। ये एक उसका पार्ट नहीं है, ये आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है यूजर इंटरफेस, बट यूजर इंटरफेस इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। ओके, सो अगेन वी कैन से दैट एक एफिशिएंट यूजर इंटरफेस का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट what is an expert system, the architecture of expert system, and some of the applications we have studied in this particular slides. And then we have studied the expert system shell, that is basically the building uh, block or the environment that we required for creating an expert system. Thank you.